every Sunday featuring workshop by the folk or craft artists who are preserving our rich culture and heritage. In today's folk craft talk session, here we have today Calligraphy by Qamar Dagar. Now I welcome Pihu Jambal from DPS Jammu to talk about calligraphy. Thank you. Have a nice day. Good morning to one and everyone. Today, Pihu Jambal is going to give some information about पीहू आप अनम्यूट हैं बेटा। with a pen. आप अनम्यूट हैं पीहू। Calligraphy is a visual art related to writing. It is the design and execution with a pen, ink brush, or other writing instrument. A contemporary calligraphic practice can be defined as the art of giving form to signs in an expressive, harmonious, and skillful manner. Wafa from Bardgaon, Srinagar. Welcome to one and all. A very good afternoon to all of you. I am Wafa Nusrat of class 9 from JNV Badgam, and I am Sama Ahad of class 8 from JNV Badgam, and we both want to give you information about Qamar Dagar. Wafa, just a moment. अभी चूंकि आप सभी को मालूम है कि जो हमारे आर्टिस्ट थे अनीस सिद्दीकी साहब वो किसी इमरजेंसी की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाए, तो हमने दूसरे आर्टिस्ट को रिक्वेस्ट किया है कमर डागर जी, जो भी एक वन ऑफ द रेनाउंड कैलीग्राफी आर्टिस्ट है, बट अभी वो हमें थोड़ा देर से ज्वाइन करेंगी, तो इट्स बेटर कि जब वो आए तो हम उनके सामने तब उनका इस्तेमाल करें, है ना, उनका इंट्रोडक्शन दें। तो वो देर से ज्वाइन करेंगी वफा, एंड आप दोनों बेटा तभी करेंगे, हम आपको बोल देंगे जब वो आएंगी। मीनवाइल उन्होंने हमसे अपनी डॉक्यूमेंट्री शेयर की है, हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे और एक छोटा सा ओरिएंटेशन भी कर सकते हैं, जिससे कि आप सब लोग जान पाएं कि स्पिकमैके क्या है और क्या कर रहा है। तो मैं एक छोटा सा वीडियो चला रहा हूं अभी, वो स्पिकमैके के बारे में ही कि स्पिकमैके किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आप सब लोग को पिन कर लेंगे ताकि आप देख सकें। ओके सर। ओके सर। कुछ चीजों को हम छू सकते हैं, कारें, फोन, कंप्यूटर्स, आपके हाथ में लगातार चलती पेंसिल, रीबॉक के लेटेस्ट जूते, आज का अखबार। कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती हैं। नई कार में बैठकर सपने पूरे होने का एहसास, नए फोन पर पहली बार अपना मनपसंद गाना, लगातार चलती पेंसिल से बना नया स्केच, आज के अखबार की हेडलाइन पढ़कर आया गुस्सा। कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जाती। हमारा म्यूजिक, हमारा कल्चर, योगा, मेडिटेशन, हमारे फेस्टिवल, ये सब हजारों सालों से इंसान की अंदर की भूख को पूरा करते आए, वो जो महसूस की जाती है। सोसाइटी फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड कल्चर अमंगस्ट यूथ, स्पिकमैके, उन लोगों से बनी है जो महसूस करते हैं या करना चाहते हैं। बच्चे, बड़े, स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, डॉक्टर्स, फर्क ये नहीं पड़ता कि आपकी उम्र या प्रोफेशन क्या है, सवाल ये है कि आप अपने को समझने के लिए किस हद तक जाएंगे। स्पिकमैके का लोगो है दी वर्टिकल आई और द इनर आई, द आई ऑफ परसेप्शन एंड इंक्वायरी। हमारे लिए म्यूजिक,
कल्चर, आर्ट, हमारी सभ्यता, फिलॉसफी वो जरिए हैं जिनसे हम अपनी अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर को समझ पाते हैं। वो धरोहर जिसको हम वक्त के साथ साथ किसी हद तक भूलते जा रहे हैं। स्पिक मैके के हाथ और कंधे हैं स्पिक मैके के वॉलंटियर्स, वो लोग जो इस तेज रफ्तार जिंदगी के बावजूद अपनी विरासत, अपनी आइडेंटिटी, हमारे देश की आत्मा और स्वरूप के साथ जुड़े रहना चाहते हैं। हर साल स्पिक मैके के देश भर में फैले वॉलंटियर्स स्कूल्स, कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशंस में हजारों इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। इन इवेंट्स से हमारी सभ्यता और संस्कृति वहां पहुंचती है जहां हमारा भविष्य है, हमारा फ्यूचर है, हमारा यूथ। फिल्म, थिएटर, म्यूजिक, डांस फॉर्म्स, फोक आर्ट और इन जैसे और माध्यमों से हम लाखों लोगों तक अपनी हजारों साल की विरासत को पहुंचा पाते हैं। वो विरासत जो सिर्फ हमारी है, वो विरासत जिसको बचाना या जाने देना सिर्फ हमारे हाथ में है। वो विरासत जिसको आज हमारी जरूरत है। बारे में का एक इंट्रोडक्शन है। So beautifully
Sir, voice is not audible. Sir, voice is not audible. Shefali ma'am. सॉरी आवाज Still, नहीं voice आ is रही है. not coming. आवाज नहीं आ रही है. सॉरी. सॉरी एवरीवन, वॉइस नहीं आ रही है इसकी. हम फिर से इसे चलाते हैं. देयर इज मस्ट बी अ टेक्निकल फॉल्ट इन इट. सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस एवरीवन. सॉरी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस रहा. हम अगेन शो कर रहे हैं कैलीग्राफी के लिए. जो हमारे आर्टिस्ट हैं उन लोगों ने एक अच्छा सा वीडियो शेयर किया जिसको हम देख सकते हैं. मीनवाइल जैसे ही कनेक्ट होगी हम आपसे बात करेंगे. हमारे साथ शाजिया हमीद जी हैं, हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं. हमारी कश्मीर से हमारी फोक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अभी कुछ दिनों पहले परफॉर्म भी किया था. alphabets to create works based on my understanding of the language I speak. Actually, if you go traditionally, I mean, there's the system of Guru Shishya, or you have the institutions where you can learn. I would say Guru Shishya system is a very nice system of learning, because you have the knowledge and wisdom of the Guru and everything, the experience of his, and when you're living together with him, or you have the opportunity to spend more time than in an institution. It is a very enriching experience. So this is one. Institutions is another one, and of course now you have the internet. You have various ways of learning, actually understanding the subject that calligraphy is. So
these three, broadly I would say. I would certainly say, because I'm a Guru Shishya product, and I've seen my family also has had this tradition of Guru Shishya parampara. So for me, that is the most wonderful, most important, I would say, because it's more than going to an institution where you may have classes for say 2 hours, 3 hours, or whatever. But beyond that, I mean, suppose because we're talking of arts, that means we're talking of inspiration and moods. So that keep changing. It's not a switch that you can switch on and off. It's human beings we're talking about. So when when is the guru in the mood to share something, and if the Shagird is there to receive it, I think that is something so rich and so precious. This can happen only in Guru Shishya system, so I am all for that. But of course, I understand that this is not possible at all times. So I would say, in fact, I'll go on to say that institutions are also important, because they give you at least some idea of what this art form is about, and the practice that you must do and the regime that you must follow, or whatever. So if it's a mix of two, when somebody is fortunate enough to learn both in both these systems, I think that is an ideal situation for me. And of course, internet, definitely informations that are not maybe not so easily available, because it's about some other tradition, that may help you in understanding your own system. So I think that's also very important. I was very fortunate to have learned it from Hazrat Amir Abdullah Khan. We call him Baba. He was a mystic, and he was our spiritual guru as well. He was a master calligrapher. He wrote Quranic verses, and he specialized in something called Tughra, which is a collection of verses from the Quran, from the Holy Quran, and you would write them in a certain way. It's just like you wear a taweez or an amulet for yourself. This is like an amulet for the house. So for prosperity, for protection, for good vibes, all of that. So that's what he specialized in, and I was really fortunate to have learned things that definitely I would not have learned anywhere else, because he taught me very beautiful, simple things. He said like simplicity is very important. You may do a lot of other things, but it should boil down to just doing something simply that is the most beautiful. And at that moment when he was telling me that, because I was always interested in designing things, just elaborating and all that, which I still do. But I understand and I realize the importance of it, that when it's something simple, it's more potent. When I saw his work for the first time, to me that did not look like script at all. For me, they were like beautiful designs, despite knowing what the Arabic, Urdu, Persian scripts look like. So it was just magnificent, and it was introduced by my father in the book on Hassan Masoudi's works, who I consider to be one of the greatest, because many people can write well and beautifully and very effectively, but what is special about him is that he has transcended borders and barriers. People may not know the language. You don't need to understand the language or know the language to appreciate, because it's an art form. It's a visual art, an important visual art. So that he has managed to do. And so he's contemporary and traditional, I would say both. I think he's one of the greatest ever. And his works speak for themselves. I don't need to say much really. So I would say that what he does, because eventually it boils down to the fact that this is an art of letters, of alphabets. So they are what they were before also. Of course, they've gone through
transition, and they don't look, I mean, the way they started off and how we use them today, it's already a big change. So to do various experiments with that and try out different things, I think this is what how do you say, one artist is of a certain kind, and if you're just replicating, that's one thing, but if you want to hold your own and do something which is your own reflection, I think that's what he's managed to do. And like I said before, you don't need to understand Arabic or Persian. You can see that it's just a fantastic whole body of work that he has done. I don't know how it started, really, to tell you very honestly. It was just, I suppose, the influences, your mahal, that one is brought up in, that remains throughout the life. So I think that's got a lot to do with what was around me, or I was around. So it was the Hindi, I wanted to be a visual artist. I wanted to design, paint, all of that, and I had a fairly decent handwriting. So I would write, I would spend a lot of time, writing nicely and maybe designing a little bit. So it started from there, and I cannot even remember. One instance, yes, but how this sense developed that I should try and bring them together, maybe my curious mind. And so I started to see these two scripts. For me, they're just beautiful abstract forms. They could be any script, so you can be drawn to them because of their sheer beauty. So I was drawn, and I thought, well, this is, the language we speak at home is Hindustani, and it's a mix of both Hindi, Urdu influences and all that. So it will be interesting if I were to bring them together as one. So I just experimented, and like I think I told you before also, that initially I was very apprehensive, that because in my family a very pure tradition was being followed, and then I was doing something which was very different, very sort of, I didn't know where it will take me, and then I started to mix two scripts and languages. So I was initially very, I'm not sure, very shy to even show my work anywhere. But with time, I was appreciated and encouraged. So that led me to bring them together. So I'm, one is written from left to right, other from right to left. Urdu from right to left, Hindi from left to right. So I feel it's a natural coming together of two streams. It's an amalgamation, and that's how our culture is. Something to be, appreciated and celebrated. And this is what I like to do with my work. I feel, all art forms have something in common. There is something, and they're different because they are different. They have different mediums to convey what they have to. So in music, because I come from a family of musicians, so there are notes. So notes can be very powerful, very soft, very loud, or almost inaudible. And then there's a flow, there is fluidity, all of that. So you actually, it's all a lot of emotions actually in all art forms. So for instance, if you hear a very beautiful piece of music which has a lot of pathos, so you start feeling those feelings you have inside you. Likewise, if it's about valor, about something or other emotions, all of that you feel just through music, just through the way they are sung, through notes. So, and then like if you take the instance of the dancers, they have the mudras, so they convey through that.
or you have poets or writers, so they have, you know, a collection of words. So imagine, like, it's the same for everybody, all of us know the same script, but they manage to actually create such beauty in the way they write their poetry, and they actually manage to transport us to wherever they are thinking and wherever they are, you know, taking their imagination. So all of that, I feel we have the strokes to do the same thing. So a stroke can be very powerful, and it can be very almost, you know, not there. It's like almost blank, but it is there. So that emotion is being conveyed through this medium. See, like any form, you know, when it started off, and we're talking of so many centuries ago, so whatever was available, and then black is definitely it's so potent even today, even in computers, you know, when we want to print something, we're writing something, so the automatic choice is black. So and it's so such a big innovation from how it started to today. So black that way is a very powerful color, and that was probably the only thing available at that time. So people started like that, and then since it was a tradition, and you know, there was a certain way of following, and it's, you know, the guru shishya, I would say. There were no schools as we have today. So schools probably were formed later, when there were more than, you know, one person doing the same kind of thing. Then it started to build up like that. So black was the natural choice. And from what I hear from these traditional artists, that then I think a deep brown or maroon was introduced, and then the colors. So I would say, I mean, colors speak a lot. They, you know, according to how they are used, what is used, how many, or all of that has, I mean, something, how do you say, pressing to say. So I suppose that may have led to all the other innovations, because we were also innovating in the way we were using the script, how we were writing, how we were, you know, how they were rather, and how we do it today, not how we were from before. So you know, like when I say innovation, so, you know, augmenting a line, or shortening it, broadening it, or all of this is part of this process. You know, when you want to say something, you know, something very delicate to something very powerful. So your all of these, you know, aspects play a very important role in how you're saying that. So usually, like you would say, the reds are supposed to be very powerful colors also. And for me, it is like there's no hard and fast rule as such. It's just what I feel like using at a particular time. Sometimes I could be using like a turquoise or a green for a long time with just a bit of gold in it or whatever, or you know, a red, an orange. So it just you know, phases that happen, and then you start to use, and there's some certain words that I am interpreting. For instance, I'll talk of myself only. So the colors, you know, or there's some theme I'm working on. So what are these, I mean, so I choose, and then sometimes you know, it just happens spontaneously also. Okay, maybe this is what I should do. I should bring together these two. Like, I mean, I would do, suppose I'm wearing something for myself. So these are the colors that may work together, that may not work together. So there's no hard and fast rule as such. So I use it according to how it is playing on my mind at that particular time. And then I create works around that. You know, while practicing, I realized, I know, like I have told you before also, that I don't know whether I'm equipped to really answer this question, because it's such a process, and it continues till the time you're no more. You know, it's just something that goes on. And I feel while practicing, I realized that
especially when you're using the qalam, you dip the qalam in the ink and then you start to make the stroke. So I consider it to equal to one lifetime, because when we are born one day, and one day we will not be there anymore, and so there's a very clear-cut beginning and there's a definite end, right? So when we are born, it's like the color is dark, and it almost it's like it's opaque. So you see the opaque and the transparent in the same stroke. So I consider opaque and transparent as how do you say, profusion of color, which is like element. So it is there, it's like life. So we cannot see what it is. Clarity comes with time. So you start to see the opaque and transparent as something. When we have something, a lot of ink, we cannot see through. We like so full of that we cannot see through. So with passage of time, you see greater clarity of what you had and how you want to take this forward. So this is how I see calligraphy stroke, and so it's very living. I see its functionality, I see its importance in the present day. But for me, the human element must remain at all times. It should not, I mean, it's beautiful sometimes. This digital art can be also very interesting, and but if it's a reproduction, like someone created one thing and then you can make thousands of copies or whatever, that is fine, maybe for some purpose. But when I'm using the qalam and I may be writing the same thing, same way, over and over again, it's like practicing, but it cannot be replicated. There will still be something different, and that is the exciting part for me. थैंक यू विद आप सबने हमारे साथ बेयर किया। हमारे कमर डागर जी जो हमारी आज की आर्टिस्ट हैं वो हमारे बीच में हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी इंट्रोडक्शन टीम से, सबा आर यू रेडी? जेएनबी से बच्चे रेडी हैं हमारे साथ? लेट मी चेक। कमर जी हमारे बीच में आ चुकी हैं। कमर जी आपको होस्ट बना दिया है, आप एक बार अपना माइक चेक कर सकते हैं। हाँ जी, हम देख पा रहे हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फॉर ए शॉर्ट मोमेंट। आप सभी जानते हैं जैसे कि बच्चे आज हमारे साथ अनी सिद्दीकी जी आने वाले, लेकिन उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, तो हमने रिक्वेस्ट किया है, हमारी वन ऑफ द फाइनेस्ट कैलीग्राफर कमर डागर जी ने हमें ज्वाइन किया है, हमें दिल्ली से। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आज थोड़ी सी, अभी तक हम आपकी वीडियो देख रहे थे, बच्चों ने एंजॉय किया उसको, बट अब चाहेंगे कि थोड़ी सी आप आमने सामने कैलीग्राफी की बात करें और कुछ बच्चों को कैलीग्राफी के बारे में बताएं, और फिर बाद में वो आपसे क्वेश्चन पूछना चाहेंगे। हमारे साथ आज जम्मू कश्मीर से बच्चे जुड़े हैं। जम्मू से जम्मू डीपीएस जुड़ा है, और हमारे साथ कश्मीर से जेएनबी बड़गांव अभी रिसेंटली हम लोगों ने विजिट किया था, वो बच्चे जुड़े हैं, तो सभी आपको सुनना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। जी जरूर। तो मैं शुरू करूं? हाँ जी प्लीज शुरू कीजिएगा। जी। So hello everyone, namaste, assalamu alaikum. I'm very happy suddenly this has come up, and I'm happy that I was able to join this. और मैंने सुना है कि वहाँ पे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में कैलीग्राफी का एक अच्छा सीन है और काफी लोग वहाँ पे ये करते हैं। तो बस मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि जो मैं काम करती हूँ वो थोड़ा अलग है, मुख्तलिफ है,
इस लिहाज से कि मैं पिक्टोरियल कैलीग्राफी करती हूँ, और उसमें हिंदी और उर्दू दोनों का संगम होता है। या सो उसमें दोनों का संगम होता है। और जो हमारी भाषा है, हमारी जबान है, तो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि मतलब आ से अनार होता है, और का से कौआ, वटेवर, कुआं, या जो भी अलग अलग होते हैं। लेकिन हम कभी उसके जो जो शेप है, मतलब अगर आप कैलीग्राफी की नजर से देखें तो आपको मतलब ये लगेगा कि आपको सिर्फ जो एक शब्द है और उसका जो मतलब है, उसके अलावा जो वो जो अक्षर लिखा गया है उस शब्द में, उसका शेप कैसा है, और उस वो आप किस तरह से लिख सकते हैं, कैसे लिखते हैं, कितने ध्यान से लिखते हैं, कितनी खूबसूरती से, सुंदरता से लिखते हैं कि जैसे आप में से जो भी जिनकी थोड़ी हैंड राइटिंग अच्छी होगी, आपको यही कहा जाता होगा क्लास में कि आप ब्लैक बोर्ड पे भी आप ही लिखेंगे। तो ये एक किस्म का इनाम है, क्योंकि आपने अच्छे से काम किया। तो लेकिन कैलीग्राफी, अगर आप कैलीग्राफर बनना चाहते हैं और आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं, तो इसमें हमारे पास एक ये ऑप्शन ऐसा है कि हम सिर्फ किसी दूसरे के कहे पे नहीं जाके, हम एज एन इंडिविजुअल, मैं एक बतौर खास एक इंसान जो है, मैं कैसे समझती हूँ, देखती हूँ अपनी जबान को, अपनी तहरीर को, अपनी भाषा को, अपनी लिखाई को, लिखावट को कैसे समझती हूँ। तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, है ना। तो जैसे आप लोग स्कूल में जो भी पढ़ रहे हैं, तो क्लास 10 तक और whatever, तो एक सा ही आपको करिकुलम होता है, एक से सब कुछ सिखाया जाता है। लेकिन आप में से कुछ लोग हैं जो डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, कोई इंजीनियर्स, या आजकल तो बहुत सारे लोग कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्टेड हैं, तो वो सब करना चाहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे शायद जो आर्ट्स की तरफ जिनका रुझान होगा, और आर्ट में क्या करना चाहते हैं। तो अगर विजुअल आर्ट का एक ये बहुत ही सुंदर एक ऑप्शन है, क्योंकि ये एक रेप्लिकेशन नहीं है, मतलब एक जैसे कुछ कुछ आपने देखा और आपको बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा लगा, और आप उसको रेप्लिकेट करना चाहें, आप उसको वैसे ही लिखना चाहें जैसा वो दिख रहा है। तो ये भी एक स्किल है जो बिना प्रैक्टिस के, डिसिप्लिन के नहीं आ सकती। लेकिन अगर आप अपनी इसकी पहचान देना चाहें, अपना, जैसे आप कैसे समझते हैं, जैसे कोई लफ्ज हैं, जैसे मैं हमेशा ये 2-3 एग्जाम्पल अपने हर वर्कशॉप में देती हूँ। जैसे बुजुर्ग, शब्द बुजुर्ग है, मतलब एल्डर, जो आपके आपके एंसेस्टर्स हैं, है ना। तो अगर उसको हम पिक्टोरल फॉर्म में लिखना चाहें तो वो कैसा दिखेगा। तो और उससे पहले आपके, जब आप ये शब्द सुनते हैं, ये सुनना भी उतना ही जरूरी है जितना लिखना, देखना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। सारे सेंसेस को आपको एक तरह से एक साथ लाना होता है ना। तो अगर जब आप उनको आपके जहन में क्या पिक्चर आती है बुजुर्ग की, तो आप में से जो लोग यहाँ प्रेजेंट हैं, मैं थोड़ा इंटरेक्टिव इसको करना चाह रही हूँ, तो आप में से मैं कुछ लोगों का रिएक्शन चाहूंगी कि अगर बुजुर्ग शब्द आप सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है। बाद में मैडम, आगे सभी को तो हम लोग एक्चुअली स्पीकर पर नहीं ले सकते क्योंकि डिस्टरबेंस रहती है। मैं फिर भी कोशिश करता हूँ कि स्कूल की तरफ से अगर इंचार्ज है रिम्पी जी या हमारे और टीचर जी कुछ पूछना चाहे ताकि बच्चों का जी इंटरेक्शन हो सके। जी ऑन जी द बिहाफ ये ऑफ स्कूल, जो हमारी कोऑर्डिनेटर है रिम्पी जी, अगर आप ऑन द बिहाफ ऑफ बच्चों के पूछना चाहें, या जी हमें किसी स्पीकर का नाम बता दें ताकि हम उसको अलाउ कर सकें कि वो अपनी बात कह सकें। जी। तो मैं इसको जारी रखती हूँ जब तक आप पूछ हाँ रहे जी, हैं। मेरे पास तो जैसे ही हाँ आता हाँ है तो हाँ मैं हाँ कंटिन्यू जी कराता हूँ जी। जी। तो आप तो मतलब बुजुर्ग मेरे लिए एक बड़े बैनियन ट्री की तरह है।
क्योंकि उसमें जो जो क्वालिटीज एक बड़े बैनियन ट्री में होती है, बरगद के पेड़ में, वो सारी बुजुर्ग में होती है। वो आपको रूट्स हैं, वो आपको तहफ्फुज देता है, मतलब आप उसके नीचे बैठ के आराम से अच्छा से रेस्ट कर सकते हैं, अच्छा काम, जैसे आप अपने दादा दादी के साथ उनके साथ बैठ के आप अच्छा वक्त गुजारते हैं, आप भूल जाते हैं कि क्या परेशानी, कोई भी परेशानी हो तो भाग के आप उनके पास जाते हैं। या ये सारी चीजें है ना, ये छोटी छोटी चीजें, इमोशंस। आर्ट का मतलब है इमोशन का शेयरिंग, चाहे वो संगीत के जरिए हो, चाहे विजुअल आर्ट हो, चाहे डांसिंग हो, चाहे पोइट्री हो, कोई भी फॉर्म में जो आर्ट है वो एक्चुअली इमोशंस हैं जो एक आर्टिस्ट शेयर करता है अपना, अपना जो उसकी सोच है और उसकी अपनी सलाहियत है, अपनी एबिलिटी है, उसके बेसिस पे। तो ये बहुत एक जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपकी आइडेंटिटी क्या है ना। आप ठीक है सबके साथ आप काम कर रहे हैं, लेकिन एक कुछ अलग सा क्या है जो आपको खास बनाता है। तो इसमें ये पॉसिबिलिटी है, अगर आप पिक्चोरियल कैलीग्राफी कर रहे हैं, क्योंकि आप कैसे देखते हैं दुनिया को, आप अपनी स्क्रिप्ट को कैसे देखते हैं, आप अपनी स्पोकन लैंग्वेज को, भाषा को कैसे देखते हैं, और अगर उसको आप इंटरप्रेट करना चाहिए, थोड़ा सा ज्यादा समझ लीजिए एब्स्ट्रैक्ट है, ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है, इसलिए क्योंकि लोगों को थोड़ा वक्त लगता है समझने में। लेकिन जब एक बार आपको ये समझ आ जाएगा कि क्या किया जा रहा है या क्या आप शेयर कर सकते हैं, आप पॉजिटिविटी शेयर कर सकते हैं दुनिया में, कि आप अच्छी बातें हैं जो अच्छे वर्ड्स को इंटरप्रेट करें, अच्छी बातें शेयर करें दूसरों के साथ, जो सिर्फ उस वक्त तक नहीं, बहुत आगे तक जा सकती हैं, और आपको पता भी नहीं होगा कितने लोग उससे फायदा उठा सकते हैं, कितने लोग उससे खुश हो सकते हैं, कुछ उनके जीवन में कोई तब्दीली, अच्छी तब्दीली आ सकती है। तो ये सारी चीजें आर्ट इसलिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि एक पूरा जैसे बाकी जो जितने सेक्टर्स हैं उसमें सब अपनी जगह इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ये एक इंसान का एक एवोल्यूशन, जो एक बेहतर सोच का एक उसका सिलसिला बनता है इसकी वजह से। और वो ये बहुत ही जरूरी एक चीज है जो आर्टिस्ट कर पाते हैं, शेयर करते हैं, करना चाहते हैं। तो आप में और कुछ अलग सा, मतलब, और इसमें कोई फोर्सफुली नहीं होना चाहिए, आपका खुद मन करे, आप खुद सोचें, आप देयर शुड बी फूड फॉर थॉट, कि खुद सोचें कि अगर ये सारी हैं चीजें तो हम कैसे लिखेंगे। अभी एक अचानक ये ऐसा सेशन हो गया, तो मेरे पास अभी कलम वगैरह दिखाने को नहीं है, लेकिन आपने शायद वीडियो में कुछ देखा होगा। तो मैं हिंदी और उर्दू, जैसे मैंने बताया, मैं दोनों को कंबाइन करके पिक्चर्स बनाती हूँ। और मेरे लिए जो जितने ये अक्षर हैं, चाहे वो हिंदी के हों, चाहे वो उर्दू के हों, इवन अंग्रेजी के, जबकि मैं अंग्रेजी में इंटरप्रिटेशन नहीं करती हूँ, लेकिन ये दोनों जो हैं, ये जितने इस अल्फाबेट के जितने लेटर्स हैं, वो सारे मेरे बचपन के दोस्त हैं, क्योंकि मैं उनको सबसे ज्यादा जानती हूँ। तो इसमें आपके आपके भी जैसे मेरे, वैसे आपके भी, तो बहुत अलग अलग तरह के सवाल आप पूछ सकते हैं, और कॉन्वर्सेशन उनके साथ कर सकते हैं, और उनको अलग अलग तरह से लिख सकते हैं। सिर्फ एक ही तरह लिनियर राइटिंग, मतलब सीधा सीधा जो लिखा गया है, वो उसकी अपनी खूबसूरती है, अपनी स्किल है, अपनी बात है। लेकिन यहाँ पे आपको फ्रीडम है कि आप उसको अपने मन को फॉलो करें, और उसके अनुसार आप कुछ कहना चाहें। तो ये बहुत ही सुंदर एक पॉसिबिलिटी है, जो अगर आप इसकी तरफ ध्यान दें तो बहुत अच्छा काम हो सकता है। ठीक है, तो शुरुआत मैं इसी से करती हूँ। और क्योंकि हिंदी जो है वो लेफ्ट से राइट लिखी जाता है, और उर्दू जो है राइट से लेफ्ट लिखा जाता है, तो ये एक नेचुरल ऐसा लगता है कि कमिंग टुगेदर ना, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, एक साथ आना किसी चीज का, तो ये मुझे बहुत सुंदर लगता है। और ये मेरा जो कल्चर जिसमें मैं पैदा हुई और मेरे आसपास था, ये उसका एक रिफ्लेक्ट जो मेरे काम के द्वारा मैं शेयर करती हूँ। ठीक है, तो अगर आपके
पास कोई सवाल है या कुछ है जो आपने वीडियो देखा उसमें से कोई सवाल निकला आपका, तो आप मुझे बताइए। जी, मैं इनवाइट कर रहा हूँ जेएनवी बड़गांव से हमारे साथ हैं बच्चे, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपना स्पीकर ऑन कर सकते हैं बच्चे फर्स्ट। वफा आप बात कर सकती हैं, वफा, और दूसरा बच्चे का नाम मैं नहीं जानता हूँ। ये बनी कौर है, कोई बनी कौर, बनी कौर, शी हैज रेज्ड हर हैंड। जी जी, मैं उसके बाद उनको अभी बुलाऊंगा, जेएनवी के बच्चे हैं। मैं वफा को बोलना चाहूंगा। वफा, आप कुछ पूछना चाहती हैं? जी जी पूछिए। सर पूछना तो नहीं चाहते बट कुछ बोलना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जो भी कुछ बात करना चाहें वो कमर करिए जी आपके साथ बात करने के लिए आई हैं, तो जी। आप उनसे बात कर सकते हैं जी। सर हम इनके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज थोड़ा सा बताइए जरूर। ओके सर। अल्लाह खैर। ये लोग एक्चुअली वो सेशन थोड़ा सा चेंज हो गया, तो दे आर वेल प्रिपेयर्ड, तो उनका मिस नहीं होना चाहिए, दैट्स व्हाई मैंने उनको इनवाइट किया जी। जी जी जी। यस प्लीज कंटिन्यू। Welcome to one and all. Good afternoon to all of you. I am Wafa Nusrat of class 9 from JNV Badgam. And I am Saima of class 8 from JNV Badgam. And we both want to give you information about Qamar. Qamar Dagar belongs to a family of classical musicians of India, but she was always drawn towards visual arts. Amir Abdullah Khan, her spiritual and calligraphy guide, inspired her to follow her ambition. After her graduation in sociology from University of Delhi, that helped her to be sensitive to the aspects of other cultures, she traveled to Europe as an accompanying musician with her family. With Urdu spoken at home and Sanskrit and spoken at home, Hindi, Raj Bhasha, sung in the music compositions, she developed a fascination for the richness of those Indian languages. Progressively, these very languages, Hindi, Urdu, became the focal point of her work. Amir Abdullah Khan was a great master of traditional calligraphy, writing verses of the Holy Quran, but Qamar developed an interest in exploring two scripts that is rather unusual. He encouraged her to follow her heart and enhance her skill. Since the early 90s, she works in Hindi and Urdu scripts using alphabets, letters, and art material, giving visual interaction to a chosen theme. She has exhibited in the Sacred Arts Festivals Delhi, the 80th Sufi Rang Festival, Ajmer, Kalam Atma, India International Center, Delhi, Teen Murti Bhavan, Delhi, MF Hussain Art Gallery, Delhi, Kalam Atma, Jawahar Kala Kendra, Jaipur. His works have also been on display in France, Akshara at UNESCO House. Her works are in private collection of people in India, US and Europe. She represents India at International Calligraphy Festival in Iran. She is project participant of Russia-based MVK Calligraphy Company. She has received Women's International Network Award in 2012. As founder, director of Kalam Kalamkari Creative Calligraphy Trust 2010, Delhi. She has organized and curated international calligraphy festivals in Delhi and Jaipur. She is committed to working towards making creative and traditional calligraphy known the world over as an important visual art. She is also the Joint Secretary of Drupad Society and actively involved in the activities of Dagar Brothers Memorial Trust. Thank you to all dignities, students, friends, and the Speak Mickey team members. Thank you so much. Have a good day ahead. Bye. Well, thank you to both of you for your kind words and everything that you said. Yeah, there's certain things like, yeah, I followed my heart and I started to do what brings me the greatest joy. And to give me an identity of who I am, not
what my family is, or I mean, whatever else, but it's just I am as an individual. So you have to look for it, and that is why it is important that there's a spiritual side to arts, and especially calligraphy, especially when you're writing religious text. My Sufi master was also a calligrapher, master calligrapher, and he taught me very Ma'am, beautiful. I want to say something. Yes. Okay. Ma'am, calligraphy is a visual art related to writing. Yes. It is a design and execution with a pen, ink brush, or other writing instrument. A contemporary calligraphic practice can be defined as the art of giving form to signs in an expressive, harmonious, and skillful manner. Thank you, Yes. ma'am. Yes. Absolutely. You're right. These are the things, because you see, what we know as tradition today was a contemporary yesterday. When something new was created, and now what will be created now will be traditional tomorrow. So this is a process, and this is the beauty of the humankind, that we are always trying to create something new, inventing something. And 100 years from now, if people look back and they want to find out what was happening in the field of calligraphy, for instance. So were we just replicating, just repeating what we've seen around or what was around us, or did we try to do something new? So new can be, it is not necessary that everything new or everything old is good, or everyone likes it. But it is a process which is very important, because that will lead you to doing better things in future. So that kind of raw material is necessary to be created at that time. Whether it is good or not, whether people like it or not, is one thing. But later on, it can be, we can go back to those that raw material in form of, when we were trying to create something new, and maybe create something which is liked by everyone, which everyone understands. And this is how it works, which is legible. And another thing, because we are from India, and we have these scripts, Hindi, Urdu, Sanskrit, or whatever, Devanagari, Urdu, which is inspired by the Arabic script, Persian script. But it is not so, it's not necessary that somebody, say, who lives in China, for instance, or who is from Brazil or somewhere far away, they will not know our language, right? But emotions, or something which has been turned into artwork, that that can connect people, because art transcends borders. So that you can connect with, whether we see something, the script in Chinese, it is so beautiful. We can see how well it has been written, whether we understand or not, but we can still appreciate, because it has been written so well. There is flourish, there is there's so much beauty, there's a spontaneity, everything that are part of कैलीग्राफी। अनफॉर्चुनेटली अभी एक अचानक ये सेशन हुआ है, तो मैं ये सब आपको नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत एस्पेक्ट्स हैं विजुअल आर्ट के और कैलीग्राफी के, जो अगर आप उसको करने लग जाएंगे तो उसमें बहुत मजा आता है। और जब आप भूल जाएं कि आपको खाना खाना है, या आपकी चाय रखी है, ब्रश आपका चाय में चला जाए, ये सारे ब्यूटीफुल अच्छे अच्छे चीजें होती हैं, और उसमें खूब मजा आता है। मुझे बहुत मजा आता है। तो मैं ये हमेशा सोचती हूँ कि जो मेरी बात सुन रहे हैं, शायद अगर वो करेंगे उनको भी मजा आएगा। तो इसके ये सारे छोटे छोटे चीजें हैं, और हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि हम अपने जो सोसाइटी में पॉजिटिविटी लाएं, सुंदरता लाएं, अच्छे भाव लाएं, जिससे लोग कनेक्ट आसानी से हो जाएंगे। इमोशन से आप बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाएंगे, चाहे आपको भाषा आती हो या नहीं। अगर कोई स्माइल करता है, यू डोंट से आई एम स्माइलिंग इन उर्दू, आई एम स्माइलिंग इन इंग्लिश, यू डोंट से दैट, राइट? स्माइल इज स्माइल।
So that is why because it is emotion, that is why you can connect with it, है ना? तो आपके पास और औरों के पास कोई सवाल है या कोई बात कहना चाहते हैं तो आप मुझसे शेयर करिए, ठीक है? मैं रिक्वेस्ट करूंगा डीपीएस जम्मू से कोई और बच्चा, गुरबानी या पीहू कुछ और बात पूछना चाहती है तो आप पूछ सकते हैं। देन वी विल इनवाइट पेंसिल मैम, हमारे साथ हैं रुचि छाबड़ा जी, उन्होंने भी ज्वाइन किया तो हम उनको इनवाइट करेंगे। Sorry to interrupt, sir. Can I ask one question to ma'am? This is Anshul Yes. from DPS. Yes. Yeah, actually, ma'am, I just want to know one thing, that please tell us the skills that we need to be a calligrapher. What are the skills that we need to develop in ourselves to be a calligrapher? Okay, first thing is that, you know, you should be really interested, you know, your enthusiasm. Enthusiasm is a tool that you must carry with you at all times, because that makes you do things that you may find difficult, right? But when you want to do, it happens quickly, as opposed to when you have to do it, right? So this is enthusiasm is one thing, and to be on the lookout for something new, something ready to ready to look at things very minutely, and using, of course, these skills when you use the kalam and write well. These are very important things. Like you have to make a paper, ink, and the kalam, the pen or pencil, whatever you're using, your best friends. And then you can have different conversations. You can have fun with them. You can have conversations with them. So this may sound very strange for you when I say these things, that you have to make friends, but actually in reality, they are your friends. Pen, paper, ink, all of these are already your friends, and the letters, the alphabet, they are your friends from childhood, because you have a very close relationship with them. Whether you are writing something for a science paper, for instance, you're writing English, you're writing Hindi, you're writing even mathematics, because the script is basically a lot of geometry. And then you see, I mean, anything that you are learning in school. So these are all letters, alphabet, numerals, everything that you're using are part of the learning. And if you want to go ahead and, you know, kind of zero in on doing a visual art which is related to script, then calligraphy, of course, is the best option available. And then you have pictorial calligraphy, which is like a even more evolved form, in the sense that it is your own. It is how you are understanding something, and it has a stamp of who you are, not a reference. So, which is very important. And and then who knows, you know, you may go on to doing something so great, something so wonderful, that people would want to know more about, want to follow, and you know, get inspired by. So these are very you know, as a society to develop, I think these things are very, very important. And calligraphy gives us this opportunity. Yeah. Thank you so very much, ma'am. Thank you so very much. Thank you. So is there anyone with a question or any impressions from the video that you may have seen? Yes, Anything that you want to ask? yes, ma'am. Yeah. Ma'am, I'm Bani Kaur from the Sparkle School. I'm in 8th class. Yeah. Ma'am, I have a question that, ma'am, if someone is interested in calligraphy, so ma'am, if someone is from like a society, Can you like, hear a little louder? If you speak a little louder, please. ma'am, can you hear me now? Yeah. Ma'am, if my question is that, ma'am, if someone is like doesn't have that much money to get a guru to learn calligraphy, or to go in the institute, so ma'am, what you will prefer to do the steps in the home to learn the calligraphy basics? Yeah. So you see, I do today, I did not learn from a guru. So what my spiritual guide and my Baba taught me was the basics, you know, and also the spirit of calligraphy.
and the basics which are the same, when you start in nursery, ABC, Kakha, Ga, and all that. And then you go on to, writing things for, say, biology, for physics, chemistry, other subjects, and which is much more evolved, right? Much more sophisticated than you started. So these are the things that also apply to calligraphy. You don't need a lot in this, in the sense that you need paper, ink, and paper, kalam, and you first just start to write whatever script you want to work in. You write very carefully, very nicely, and then you write 10 times, 20 times, 30 times. Then you will see an improvement. If you're able to see that improvement, that means you're on the right track. If you're not able to see that, that means you are taking it very lightly. It's not really resonating with you, which may not work, because you have to internalize everything, in the sense, and it should not be forced. It should happen naturally, and it can happen naturally, and it does happen naturally. I can tell you, I can vouch for it. So these are the things that you have to bear in mind when you work, and just write your script well first, and then go on to doing other things, like Stick McKay. They're doing like great job. They invite many different artists. They, like Anis Siddiqui Saab, was to be here, but unfortunately he couldn't make it. So people like him will be invited by them. So you have an opportunity where you don't pay anything, but you learn many minute things that may not be taught at an institution, right? At an institution which has its advantage, in the sense that you go for a class 11 to 12, 12 to 1, and whatever. But the way I learned it, I had the opportunity to learn the Guru Shikha system, which was very beautiful, very essential. And it is to do with, inspiration that comes to the guru, to the student, to anyone who is really present. And like, for instance, the guru will not say, come tomorrow at 11, I will feel inspired at 11 tomorrow, So these are the things that you have to respect, and you have to understand. Very, very essential to respect, understand, give time, and go slow, because computers and everything is being typed and everything, which has its advantage, which has its beauty, but it should not be at the cost of the human element. So you will have the opportunity to learn, even if you cannot afford regular classes or whatever, but you can always check what is it that you can still do. And if you're really serious, because the teacher is also looking for people who are serious at to learn, not something frivolous. So this is also very important, because who knows, in future you may become a teacher, or you may want to do something, and you will face the same problems, or same. Excuse me, ma'am. Yeah. Thank you, ma'am, for answering my question. Ma'am, I have a last question with you, that, ma'am, like you told, you are from a musician family. So, ma'am, you choose for your career, like your passion, calligraphy. Ma'am, like you have other option like music also. So, ma'am, you can choose that also to support your family that way. Yeah, I did. Of course, I mean, music is so integral to my life, to my system. I've always, I mean, every day of my life, I hear music, and so does everyone else. But this one is very special. And I was always drawn to visual arts. I followed my heart and started to do this, and this has brought me a lot of joy, a lot of fun, and then it led me to do something different,
something very, very different from the usual calligraphy. I was able to do that because I followed my heart and I started to enjoy it. And at one point in time, I was afraid that I'm doing something different. So I don't know how it will be perceived. Ma'am? बेटा मैं बीच में रोकना चाहूंगा. आई एम सॉरी कि बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे बच्चों के और हमें कम मिला समय. Ma'am, calligraphy is a kind of music, not for the ears, but for the eyes. Beautiful. Calligraphy is the most intimate, private, and spontaneous expressive means. Like a fingerprint or voice, it is unique with every person. How beautiful is that? How lovely. Right. बेटा लेकिन अगर आप अपना वीडियो भी ऑन रखते तो हम आपको स्क्रीन पर दिखा सकते थे. तो जो भी बच्चा क्वेश्चन पूछे वो जरूर उसको स्क्रीन ऑन रखना चाहिए अपना. थैंक यू सो मच. आप सभी ने बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे हमारे साथ. बेटे अभी रुकेंगे, 1 मिनट के लिए रुकेंगे क्योंकि हमारे पास समय की लिमिटेशन है. आई नो बहुत सारे क्वेश्चन होंगे और मैं सबसे पहले तो माफी चाहता हूँ कि अनीस सिद्दीकी जी की तबीयत ठीक ना होने की वजह से हम एक प्रॉपर जो सेशन होता है क्राफ्ट सेशन नहीं कर पाए. और हर सेशन में हमारा प्रैक्टिकल होता है. जो आर्टिस्ट आते हैं इंट्रोडक्टरी वो पार्ट सिखा के भी जाते हैं एक इनिशियल रूप से. बट आज हमारे साथ थोड़ी सी मजबूरी थी इसलिए हम लोगों ने कमर डागर जी से रिक्वेस्ट किया और उन्होंने बहुत ही शॉर्ट मोमेंट में, हालांकि ट्रैवल कर रही थी, सो मेनी थिंग्स एट होम, उसके बावजूद भी उन्होंने ज्वाइन किया. और इसके साथ मैं धन्यवाद करता हूँ डीपीएस जम्मू, उनकी प्रिंसिपल हमारे बीच में रुचि छाबड़ा जी. मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आज के कार्यक्रम के लिए कुछ शब्द कहें. अब जम्मू डीपीएस शायद पहली बार स्पिकमके के कार्यक्रम से जुड़ा है और वो भी ऑनलाइन, तो उम्मीद करते हैं आगे भी आप जुड़े रहेंगे. प्लीज से योर वर्ड्स प्लीज. Thank you sir, and I thank Miss Qamar Dagar ji for your introductory talk on calligraphy. Believe me, it was pleasure listening to you and the way you inspired the children to make the letters, pen, paper, their friends. I'm sure it would have inspired them a lot. That is what I feel is the need. We just need to show the children way and then let them walk. So many questions that they asked, especially the last one, so beautifully it was encapsulated. So it shows that the spark has been ignited. Apart from the practical value of handwriting for just completing your assignments and appearing in the test, we have learned in today's session that another form of handwriting could be connected to art and aesthetics, that is calligraphy. And simply put, art and aesthetics connect us to our innate ability to reflect upon our own selves and the world around us. So once again, I'll thank you all, and thank you Spikpike for the beautiful session. Thanks to all the parents and the children and the teachers, the co-hosts. Thank you, ma'am, and have a blissful day. Asked wonderful questions. So my best wishes and blessings with all of us. Thank you, ma'am, and have a blissful day ahead. Thank you so much. Hello, ma'am, I'm showing my calligraphy. Oh, already. Lovely. So impressed. Yes, हाँ, बच्चों ने अपने से कुछ ट्राई किया है. Vivek ma'am, you must take a note of it. We can soon have a journal of all these pieces so that we can send to ma'am for appraisal. Sure. How nice is that? I'm very happy to hear this. Beautiful, Yashika. Keep it up. So impressed. So I hope कि बेटा आई होप कि नेक्स्ट टाइम जल्दी ही, ये हमारा इंट्रोडक्टरी सीरीज है मैम. मैम को बताना चाहूंगा कि हम लोग ये ऑनलाइन जो कर रहे हैं वो केवल एक इंट्रोडक्शन है कि जहां हम नहीं पहुंच सकते, ये हमें कोविड ने सिखा दिया है उस समय में, और बहुत बेनिफिशियल रहा है कि बहुत सारे स्कूल्स को हम लोगों ने ऑनलाइन जोड़ा है. हम उम्मीद करते हैं जल्दी ही हम फिजिकल प्रोग्राम लेके आएंगे आपके स्कूल में भी. मीनवाइल आप हमारे डिफरेंट प्रोग्राम से जो ऑनलाइन है उनसे जुड़ सकते हैं. नंबर 1 हमारा ओरिएंटेशन होता है, किसी भी दिन आप चाहें तो विद फ्यू स्टूडेंट्स के साथ हम लोग ओरिएंटेशन करेंगे, हेरिटेज क्लब एस्टैब्लिश करेंगे अपने स्कूल में. देन हमारे फ्राइडे सिनेमा क्लासिक्स होता है, उसमें वन ऑफ द फाइनेस्ट मूवी हम लोग दिखाते हैं चुनी हुई. देन हमारे ग्रेट मास्टर सीरीज है, जो आर्टिस्ट वन ऑफ द ग्रेट आर्टिस्ट है हमारे बीच में नहीं है, उनको हम
इंटरेक्शन के सीरीज उनके जो शिष्य हैं उनके थ्रू उनको इनवाइट करते हैं, बहुत अच्छा सेशन होता है। और क्लासिकल इवनिंग सीरीज शाम को 6 बजे होता है। ये संडे का क्राफ्ट फोक टॉक सेशन है जो आज मिक्स रूप से आपके सामने रहा, हालांकि मोर ओवर टॉक सेशन था ये, इसको हम टॉक सेशन मानते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट संडे भी हम आपको, चूंकि आज एक प्रॉपर प्रैक्टिकल से नहीं जोड़ पाए, तो नेक्स्ट संडे इफ यू वांट टू ज्वाइन, आप लोग हमारे नेक्स्ट सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। इसी के साथ में JNV बड़गांव और डिफरेंट स्कूल्स कॉलेजेस जो जुड़े रहे हैं हमारे साथ कश्मीर से खासतौर पर, उन सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे कश्मीर के जो एडवाइजर हैं मुजफ्फर अहमद भट्ट साहब, उनका बहुत सपोर्ट मिल रहा है, उनकी वजह से हम काफ़ी स्कूल कॉलेजेस को जोड़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हमें और स्टेट से, जम्मू कश्मीर से और स्कूल जोड़ेंगे, और इन सभी कार्यक्रमों में हम ऑल ओवर इंडिया से सभी स्टेट्स मिलकर जुड़ते रहेंगे। थैंक यू सो मच कमर डागर जी, थैंक यू सो मच रुचि मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। Thank you so much, ma'am. Thank you. Ma'am, nice to meet you. Have a blissful day. Thank you so much, Thank ma'am. you. Thank you. You do lots of love and follow your heart. Okay. And Thank you, ma'am. Thank you so much. Okay. Bye. 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 Bye.